Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here I am, Mrs. Nazma Atar from Government Degree College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Class 2nd year, subject English compulsory. Today I will teach you chapter number 12 from Goodbye Mr. Chips, a short novel of your syllabus, written by James Hilton. First of all, we will recall the important events of previous lecture. In previous chapter, we read about a row between Ralston and Mr. Chips. When Chips became 60 years old, Ralston called him in his office. He pointed out his weaknesses and asked him to retire. Ralston's clash with Mr. Chips had become a serious matter. The chairman of the governors, Sir John Reaver, visited Brookfield to resolve this matter. He assured Chips that the governors were with him. He could stay there as long as he could. Now come to the main points of this chapter number 12. Ralston left the school, Chatteris as a new head of school, retirement of Chips, farewell of Chips, activities of Chips after retired life. Ralston left Brookfield in 1911 because he was offered the headship of the greater public school, so he left to better himself. Successor of Ralston, Mr. Chatteris, was new head of Brookfield. He was even younger than Ralston. He was 34 years of age and a natural science tripos. He was brilliant, modern, and sympathetic. In 1913, Mr. Chips became 65 years old. He decided to retire at the ripe age of 65. Moreover, Ralston's Straits World also offended him. He was presented with a check, a writing desk, and a clock. And there was a formal farewell party, and Mr. Chips delivered a speech, farewell speech. Chips made a farewell speech in July 1913. It was not a very long speech, but it had many jokes and Latin quotations. It was made twice as long by the laughters that impeded its progress. Main things that have been discussed in the speech, main points of the speech. He remembered a lot of changes, even events and faces of the past. He remembered the first bicycle, the lamp boy who lighted lamps because there was no electric light in the city at that time. He remembered that hard forest had lasted for 7 weeks, German measles that had turned the big hall of the school into a hospital, the great bonfire, and the tuck shop made Mrs. Broll. But above all, he remembered his students. He had thousands of faces in his mind. He made reference to several of them in his speech. In his speech, Mr. Chips discussed about so many things in which he described mainly about लैम्प बॉय. उस वक्त जब मिस्टर चिप्स ने 1970 में ज्वाइन किया था तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी स्कूल में और हॉस्टल में. वहाँ पर एक लैम्प बॉय हुआ करता था जो लैम्प्स को साफ़ करता, लैंटर्न्स को साफ़ करता और शाम को उन्हें जलाया करता था. फिर उसके बाद उसने ज़िक्र किया कि उसे याद है कि एक हार्ड फ्रॉस्ट थी जिसकी वजह से 7 वीक्स तक स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई. फिर एक बीमारी फैल गई थी, उसका नाम था जर्मन मीज़ल्स, और बहुत सारे बच्चे इसका शिकार हुए. और जो ब्रुकफील्ड का मेन बिग हॉल था वो एक हॉस्पिटल की शक्ल इख्तियार कर गया. फिर से ट्रक शॉप पर मेड जो थी वो काम करती थी, मिसिस ब्रोल, उसको याद करते हैं कि फिर उसके बाद बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उन्हें, या स्कूल में जो एक बॉन फायर हुआ था उसके बारे में बताते हैं. फिर कहते हैं कि स्कूल में जो थाउजेंड्स बच्चे हैं जो उनके दिमाग में रहेंगे, उनके जहन में उनकी बातें रहेंगी, वो उन्हें याद थे.
तो कहते हैं जो आप टेक्स्ट में देखें, कहते हैं आई रिमेंबर्ड ऑल योर फेसेस एंड आई नेवर फॉरगेट देम, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फेसेस इन माई माइंड, कि मेरे माइंड में हज़ारों चेहरे हैं. द फेसेस ऑफ बॉयज़, इफ़ यू कम एंड सी मी अगेन इन ईयर्स टू कम, एज आई होप you all will, I shall try to remember those old faces of yours. उन्होंने कहा कि अगर आप बड़े हो जाएंगे, उन बच्चों से जो उस वक्त मेन वहाँ पर थे, उन पर ख़िताब करते हुए कहते हैं कि जब दोबारा आप आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पहचान लूँ. फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं. चिप्स जो हैं वो रिटायर इसलिए हो रहे थे, जो हमने पीछे भी मैंने मेंशन किया कि उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, उन्हें ब्रोंकाइटिस हुआ था और वो काफ़ी दिन तक अपनी ड्यूटी पर जो है वो नहीं रहे और उन्होंने फैसला किया कि मुझे जो है वो रिटायर हो जाना चाहिए. तो अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए अगस्त 1913 चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू वेस्टबैडन, वेयर ही लॉज्ड एट द होम ऑफ द German master at Brookfield, Stifel, with whom he had become friendly. उनके साथ उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप था, तो वो उसके पास जर्मनी में जाकर क़याम किया. वहाँ पर कुछ मौसम बेहतर था. वहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद जब वो इन सितंबर व्हेन ही टर्म बिगन, चिप्स रिटर्न एंड टुक अप रेजिडेंस एट मिसेस विकेट्स. मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट लेने के बाद चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा था कि मिस्टर विकेट के साथ वो उनके सामने अक्रॉस द स्कूल रह रहे थे. वो वापस आ गए. ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्गर he felt a great deal stronger and fitter after that holidays and almost wished that he had not retired. उन्हें ये भी लगा कि मुझे शायद रिटायर नहीं होना चाहिए था, 1-1.5 महीने की में ही मेरी सेहत बेहतर हो गई है, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे. तो उन्होंने सोचा कि किस तरह से रिटायरमेंट के बाद अपनी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए. तो रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स ने ज़्यादातर तवज्जो जो है वो स्कूल की मुख्तलिफ और टाइमिंग्स की एक्टिविटीज़ में रखी. ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी ऑफ द ओल्ड बॉयज़ क्लब एंड वेंट टू डिनर इन लंदन. ही इनवाइट न्यू बॉयज़ टू टी. ही आल्सो took on the preparation and editing of new Brookfield directory. He watched all the important matches on the Brookfield ground. He wrote occasional articles full of jokes and Latin quotations. उसके बाद है जी, he read the Times every morning very thoroughly and he began to read detective novels. ये आपने उसमें भी पढ़ा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कि मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी आदत थी वो रात को डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ा करते थे. और आपको याद होगा कि वो एक पेज ही पढ़ पाते थे शर्लॉक होम की स्टोरीज़ का और उसके बाद वो सो जाते थे. ये थी उनकी रिटायरमेंट के बाद एक्टिविटीज़ जो उन्होंने उसके साथ जारी रखी अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए, ताकि वो बेहतर महसूस करें. अब हम आते हैं जी अपने गुड बाय मिस्टर चिप्स लेसन नंबर 12, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी तरह से आपको पेपर में जो है वो उनका आंसर करना होता है चैप्टर पढ़ने के बाद. आप जब चैप्टर की को पढ़ा करें तो अपना रजिस्टर और पेन पेंसिल ले लिया करें अपने साथ और पॉइंट्स को नोट किया कीजिए. वही पॉइंट्स जो हम सबक में डिस्कस करते हैं दर हकीकत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये है कि वाई डिड रॉस्टन लीव द स्कूल. रॉस्टन वॉज नॉट कंफर्टेबल विद ब्रुकफील्ड आफ्टर हिज रो विद चिप्स इन 1908. In 1911 he left the school claiming that he had got a better opportunity or a better job. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज चेट्रिस. चेट्रिस वॉज अ सक्सेसर, जो है वो बाद में आया किसके, रॉल्स्टन के. ये सवाल भी किया जा सकता है हु वॉज द प्रीडिसेसर ऑफ चेट्रिस, तो उसका जवाब रॉल्स्टन होगा. दो बातें हैं, एक है प्रीडिसेसर्स और है सक्सेसर. नेक्स्ट है जी हाउ डिड चैटस बिहेव टूवर्ड्स चिप्स. अच्छा सवाल है. चैटस had a clear idea of that Brookfield was rooted deep in tradition. He honored these traditions and he realized that Mr. Chips was very important for the school. When did Mr. Chips think of getting retirement? जब Mr. Chips को chest infection हुआ तो उन्होंने ये फैसला किया bronchitis के बाद कि वो अपनी retirement ले लें. What type of the farewell was given to Chips? Chips को जो है जुलाई 1913 में एक फॉर्मल जो है वो फेयरवेल दी गई. ही प्रेजेंटेड अ चेक, अ राइटिंग डेस्क एंड वॉल क्लॉक.
डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फेयरवेल स्पीच की डिटेल्स का एक स्लाइड भी मैंने आपको बना के दी हुई है, उस स्लाइड्स को आप पढ़िए और ट्राई टू राइट इन 2 to 3 to 4 लाइन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाई वॉज बिग हॉल टर्न इनटू अ हॉस्पिटल? वो मैंने आपको बताया कि मीज़ल्स का अटैक हुआ था 1880 में, और वो तमाम स्कूल के बहुत सारे जो बच्चे थे उससे मुतासर हुए, और वो जो स्कूल का हॉल था वो हॉस्पिटल की शक्ल इख्तियार कर गया। वो वॉज मिसिस ब्रोल। जितने भी नाम हैं तमाम नावल में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप नोट कीजिए और उनको आंसर ज़रूर कीजिए। मिसिस ब्रोल वाज द लेडी who ran the tuck shop at school Brookfield. Then he got a lot of money when her uncle died in Australia, and she went to Australia. Why did Chips go to Wiesbaden? वेस्टबेडन वो इसलिए चले गए थे कि वहाँ का मौसम कुछ बेहतर था, और उन्हें जो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था कि वहाँ पर जाकर कुछ बेहतर हो सकता था। इन अगस्त ही वेंट टू वेस्टबेडन टू गेट अ क्योर। हु वाज Herr Stiefel? Herr Stiefel was his school fellow in Brookfield. He was a German. He was 30 years of Chips junior. When Chips went to Germany for treatment, he stayed with him. How did Chips spend his time just after retirement? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शुरू के चैप्टर्स में भी है और इस चैप्टर में भी है। जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट चिप्स फाउंड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ही took on the preparation and editing of the Brookfield directory. He read newspaper and wrote articles for the magazines. These are the short question answer in of this chapter. इसमें वर्ड्स मीनिंग भी होते हैं, वो भी आप लर्न कीजिएगा इंशाल्लाह और इसको तैयार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।